event is actually happening. It's very, very exciting. मैं बहुत खुश हूँ कि इस occasion में that I would like to congratulate you on this occasion. So I'm listening to Renji George talk about how we met and started to discuss this idea. I do indeed remember the moment when I said, are we talking about the same thing here? मुझे अभी भी याद है जब रेंजी जॉर्ज ने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम शुरुआत किए थे वही भाषा हम अभी कह रहे हैं. And we sat in the Claridge's Hotel in Delhi and got out a big piece of paper, and Renji drew his vision of the Dalit Community Foundation, and I looked at it and thought, yeah, we are talking about the same thing here. दिल्ली में क्लैरिज होटल में हम बैठ के जब चर्चा कर रहे हैं, रेंजी ने अपना विजन को एक पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया, देन आपको समझ आएगा हम दोनों एक ही भाषा कह रहे हैं. So let me tell you a little bit about the global growth of community philanthropy, which has really happened over the last 20 years. मैं थोड़ा ग्लोबल में last 20 years में community philanthropy कैसे प्रोग्रेस किया उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. So although the first thing called a community foundation was established in the United States in 2014 by a wealthy lawyer who was looking for a more efficient way to manage the philanthropic gifts of wealthy members of his community, the global growth has really happened much more recently. 2014 में एक कम्युनिटी एक wealthy person ने अपने पैसा को और अपने कम्युनिटी के पैसा को बना के एक फाउंडेशन बनाना चाह रहा था, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो उसके बाद में हुआ. So over the last 12 years, my organization has built up a network of some 200 organizations in almost 70 countries around the world who are, like you all in this room, are starting to look within their communities and to think about mobilizing resources and mobilizing assets for their own development. पिछले 10-12 साल में करीब हम 70 कंट्री में 70 देश में करीब 200 संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं और उनको वो अपने कम्युनिटी के लिए क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके साथ उस काम में जुड़े हुए हैं. And there are a few reasons why this idea has started to grow globally, and let me just describe some of those to you. और ये क्यों हुआ, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. One is that the world is changing. We are in a moment where many countries that used to be developing countries are now middle-income countries with growing middle class and wealthy members of their communities. पूरा विश्व बदल रहा है. अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें भी एक wealthy class इमर्ज कर रहा है. And another is that after many decades of international development aid, many of those in the development field are beginning to wonder why development perhaps hasn't really been as effective as it might have been. और सब लोग सोचने लगे अभी इतना साल के डेवलपमेंट के बाद क्योंकि काफी लोगों को हम पहुंच नहीं पाए. So community philanthropy organizations are emerging out of many different stories and local contexts. So ये फाउंडेशन लोकल कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट स्टोरीज के बाद अब शुरू हो रहा है. In Zimbabwe, the first community foundation was created out of the individual savings contributions of 30,000 women. In Zimbabwe, पहला जो हुआ 30,000 women के साथ पहला कम्युनिटी फाउंडेशन शुरुआत हुआ. In Russia, community foundations emerged after the fall of communism, where there was a need to think differently about what community was. In Russia, जब कम्युनिज्म खत्म हुआ उसके बाद ही कम्युनिटी फाउंडेशन शुरुआत हुआ. वहाँ भी सोचने लगे कम्युनिटी क्या है. And there are now 70 community foundations in Russia mobilizing local money in their communities. अभी करीब 70 संस्था कम्युनिटी फाउंडेशन है जो लोकल रिसोर्सेज मोबिलाइज कर रहे हैं. So this is a very exciting time for the Dalit Community Foundation to be emerging. और एक अच्छा मौका है कि दलित कम्युनिटी फाउंडेशन का अभी बना एक बड़ा अच्छी बात है. I wanted just to tell a very quick story about the origins of the Kenya Community Development Foundation, which is the largest community philanthropy organization, the most established in Africa. मैं आपको केन्या कम्युनिटी फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा. तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कम्युनिटी फाउंडेशन अफ्रीका में.
Its founder, Monica Matuku, would always tell the story about a broken well. उनका जो पहला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोनिका, तो उसकी वो A broken well, a well. about the broken well के बारे में बताया. So she described a community where a volunteer came from overseas and helped the community to build a well. वो एक वॉलंटियर ओवरसीज से आके उनको कैसे मदद किया कम्युनिटी फाउंडेशन सेटअप करने में वो बता रहे थे. It wasn't the community, it was before the community foundation. हाँ, It was just an NGO. Before the community setup शुरू होने से पहले एक वॉलंटियर से उनको मदद की. And a couple of years later he came back and he found that the well was broken. And everyone in the community felt really sorry for him. They said, sorry, poor man, his well is broken. So he went away, he came back, the well was broken, and everyone felt sorry for him. Okay. ये पहले जो वापिस आए फिर देखे कि जो कोशिश किए थे वो नाकामयाब वो कामयाब नहीं हुए थे तो everyone of the people were felt sorry about उसके बारे में जो जाहिर किए. And he said, but it's not my well, it's your well. And Monica would always say, development is the story behind the well. What makes a community feel like they own something rather than that something has been done for them. वो बताया कि ये मेरे को दुख नहीं लग रहा, ये आपका है, ये आपकी दुनिया है, आप उसको कैसे करें, वो आगे करें, उसको वही एक कम्युनिटी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बाद कैसे करें, उसके बाद उनके बाद पहचान में लगे. So the whole idea of the Kenya Community Development Foundation was that all communities, no matter how poor, how troubled they are, all communities have resources that they can mobilize. So केन्या में उनको महसूस हुआ चाहे कोई भी कम्युनिटी का कम या ज़्यादा रीच हो लेकिन सबके पास कोई ना कोई रिसोर्सेस है. And when community members start to contribute, they don't just start to grow a pot of money, they actually start to grow trust. So ये नहीं कि केवल पैसा की इकट्ठा हुआ, लेकिन एक ट्रस्ट आपस में बिल्ड अप हो. So for us, although community philanthropy is about money, it's about reorganizing money in resources in different ways, it's really also about building trust and connections and strong communities. So ये पैसा तो मोबिलाइज करना सभी को देना एक काम है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपस में ट्रस्ट बिल्ड करना, आपस में कनेक्ट कैसे करें, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है. In our network, we have organizations that started with money, and sometimes they struggle to build trust. अभी वैसे भी शुरू हुए, पहले पैसे से शुरू किए हैं, लेकिन आपस में विश्वास पैदा नहीं कर पाए. And you as the Dalit Community Foundation are like other partners in our network, where you're starting by building relationships, building trust, on the basis of which resources can be mobilized. दलित कम्युनिटी फाउंडेशन एक यूनिक है जिसमें पहले ट्रस्ट और आपस में कनेक्शन से शुरुआत हुआ, उस बेसिस पर हम पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं. Because without trust, money can't do anything. बिना विश्वास में पैसा की कोई महत्वपूर्ण नहीं है. So I'm going to stop there by just saying, I have told people in Hungary and I've told people in Brazil at meetings I've been at recently that this event is happening today. मैं ब्राजील में और हंगरी में भी ये इवेंट के बारे में सबको बताया हूँ. And I want you to know how excited other people in other parts of the world are about what you are doing here today. आप लोग जो काम ये कर रहे हैं दलित कम्युनिटी फाउंडेशन, इसके बारे में सारे विश्व में इसके बारे में एक्साइटेड भी है. And I want to say to the board, as you start on this journey, you are not alone. There are many others in our network and at the back of the room, and here we have partners from elsewhere in India ready to accompany you on this journey. मैं जो दलित कम्युनिटी बोर्ड मेंबर को ये कहना चाहूँ, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत लोग हैं, हम भी हैं, पीछे भी कई साथी हैं और यहाँ स्टेज में भी कई लोग. Thank you. Thank you.